सारे लोगों ने अपना होमवर्क किया है। नरेश जी, आपसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नरेश जी है राइट। तो सेट एन इंटेंशन फॉर प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग। आपने अपना इंटेंशन सेट किया है, एंजॉय द फूड एवरी बाइट। तो आज आप ये कर पाए जो इंटेंशन सेट किया? हाँ जी, हाँ जी। आई डिड दैट। इवनिंग को मैं लंगून का है लाइक लोंगन. So I was eating, and one thing I noticed is I was kept my phone nearby, so the notification was disturb me. So the learning is to keep away the distractions. Good, good. Yeah. So this is how we have to keep learning, right? So did you feel any difference in your satiety levels? Yeah, definitely. I feel like kind of a new feeling, which is of earlier I used to today in the afternoon I eat lot of grapes, which is kind of a new variety of grapes, which is not normally available in India. This is a Chinese one and a very bigger one. Okay. So these are very jumbo sized and seeded. Also inside there is a small seed. So earlier I was unable to eat those grapes, and today with mindful eating I eat too much grapes, like many grapes. So Okay, so without you were able to eat more, right? This is more, what you. I was Okay. able to eat more. And earlier I tried to shift my diversion on something device or another thing Hmm. and Hmm. eat fruits as a side. Just Okay. that I don't get the feeling that I'm eating the new fruits, and Hmm. not like that. But today I have tried that with mindful eating. I eat grapes, and also I tried with closing my eyes after keeping inside the mouth, and it also helped me a lot. Yeah. So that is like how you were able to enjoy each bite of it, and you have also written respect and honor fruits given by mother. So you are blessed that you are able to get all those things. Like I'm not getting those grapes. So when you are speaking, I'm just feeling like, oh, if I would have got those grapes, it would have been so nice, right? So this is very good. Then where are some areas you would like to see improvement? So you have written reduce anxiety and stress and have more fun and happiness in life. Okay. So these are the words that you have written. Now, when you were writing these words, okay, there must be some thought which must have come in your mind. So when you wrote anxiety or stress, so what is the reason for that? Now, personally for yourself, you need not to share with everyone in the group, or if you are comfortable, you can share, right? But if you're not, then you can keep it, write it for yourself. Or if you want to send me personally, you can send. So what makes you anxious, right? Four, five, six things, whatever things are there, right? So what makes you anxious and what brings that stress? What is the stress that you are carrying in your mind? So write that. Okay, once you will write that, then we can work out on that. Like, okay, say for example, there are five things. So in those five things, which is the one which we have to which can be solved just within few conversations on phone or taking some immediate actions, right? But we are not able to solve it because it's there in mind, but we are not actually knowing there are a lot of things, right? So we are not able to concentrate on that. So you'll write and then we'll solve that way. Now the second point, have more fun and happiness in life, right? So what is the definition of that happiness and fun for you? What are you missing in your life? What do you actually want to do on daily basis? So write that. You can share that here as well. So you have to take out time for that. Whether you can plan, say for example, okay, on weekend or maybe daily. If like some people here, they were missing some exercise or running and all, so they started running. So on daily basis they started with 5 minutes, 2 minutes, okay, and then they increased every day. So what fun and what happiness you want? Ah, ji, understand.
right? like kind of replacing anxiety and stress, usually I will be happy, right? Mostly. So yeah, the, Okay. So like the problem here is majorly related to the anxiety and stress that you are mm, facing. Can be some past experiences in your life or something going on, right? So you need to then work on that. Unless and until you will not work on that, that's not going to get resolved. Okay, by doing something or something other, it's not going to get resolved. You need to solve that. What are the what is this? Practices, okay, you would like to implement. Okay, so no screen watching. So are you able to do this? No yes. sleep without alarm? Yes, I was doing, but sometimes I'm unable to wake up. It's getting late to the office. Then again, I'm thinking, is it a good idea or a bad idea? Having sense of gratitude to the food and eating, right? That is fine. So this alarm thing, okay, like if you will be sleeping early, sleeping on time, and if you are on food, so slowly you will yourself notice that you will be able to wake up in the morning easily. So provided, like what happens sometimes, we wake up and then we would go to washroom or somewhere and again we'll go and sleep. Okay, so then if you will be sleeping again, then you will be waking up when office is over. Okay, Correct. and the timing for entry is over. Okay, Yeah, so for that you can set an alarm if it's hampering your work because currently you're not doing anything else, right? So you have to earn money to get fruits also, yeah, right? yeah. Practically you can do that, but yes, you can try this thing that if you're not putting alarm or if you're waking up the first wake up when it is happening, then you are out of your bed. Don't go back to bed, right? That is what needs to be done. So slowly this is going to be improving. This Mm, may take some time, but this is going to be improving slowly. So then is less yeah, list any thoughts, emotions, or physical sensations. So, feeling energetic, relaxed, and happy as I'm getting to know new concepts and run. Okay, so that is good then. That's nice, right? So, the next step for you is like, so here, what you have to work on, the areas where you have to work, that you have to focus, right? Like the alarm thing. This is something which will happen with time. You cannot force it or you cannot let it happen earlier. And the anxiety stress part is something which you need to solve deeply. Okay, other things are going good, you are able to eat fruits and doing things. Now the day one, and in the day one you can start writing the things that okay, what you had, and what was the emotion, thought, or anything that came, how did you felt in your physically in your body. So that is what you can write. Okay, that's good. Fine. So I think Rohini ji has also written. Rohini. Rohini ji is written, I eat healthy food and what is required by my body. I am getting all essential nutrients with power of love and kindness. My eating is like a monk, meditate, and so become my all deeds and actions. Okay, this is her intention, very beautiful intention. And areas of improvement, she has written to get rid of salt cravings, coffee cravings, spicy meals cravings, right? So Rohini ji is still having salt cravings, coffee cravings, and spicy meal cravings. Okay, so this is our topic for today only. I'll just discuss after I read this. So you will be able to find your solutions here in today's session. Whenever I go outside, I crave for coffee and seeds, bread. Okay. When I cook something, right, then also she is like, she feel like gulping the food, but she's not doing that, right? When my family plan dinner, lunch outside, I feel like eating dosa there. I crave for samosa.
So there are different things that she's craving for. So basically, she's having salty, spicy cravings, right? That is a stimulant. So because the body was habitual to stimulant, so we feel that way. Okay, this we'll discuss in detail in today's session. Then practices to be implemented is I go outside less. Okay, I eat more before going outside. I have planned my meals in three major, okay, times. Try to eat only at these timings. Okay. So this is what is going wrong here, that she's eating, still eating three meals, and that too with the timings. So there are timings that, okay, I'm going to eat at this time. This needs to be stopped here. So she needs to identify and listen to her real hunger, Rohini Gupta ji. Okay. Now, um going outside, you have to plan, like, okay, if even whatever time, whether it's morning, afternoon, or evening you're getting, you must go out, right? And then yeah, eating more before going outside is not actually a problem, but yes, if it is more, then you have to restrict it to your actual real hunger. Okay, so here you need to work on. Okay, thoughts. Sometimes I feel cold after eating fruits. There is always, what has she written? Feeling in my stomach. Good feeling in my stomach. Okay, so something is happening in this stomach. So the body is taking some action. But I am always sure that I am eating healthy fruits. Okay, sometimes I feel I am doing something very different, altogether different path of choosing healthy meals all time. Mixed feelings. Okay. So she's having some mixed feeling, which most of the people have, right? That, oh, is it the right path, what I'm doing, right? Or, like, as she mentioned, something in her stomach she's feeling, and she's feeling cold after eating fruit. So it's like we get confused, okay? And we see people around us, they are eating everything, and they are like nothing is happening, right? So then we have a mixed feeling of, okay, is this okay, or no, I should be doing that, I should be doing this, right? So you have to make more people like you around yourself. Okay, you have to create more friends like you who are on fruits, majorly on fruits. Maybe even if they are not able to sustain for longer time, but they must be knowing the journey somewhere, that, okay, this is something, right? So if they will be knowing, your journey will be easier. So I would suggest that you must talk to your family members or other people, so that they can actually understand you, try to understand you, or even not all, सिर्फ अगर breakfast में भी वो साथ दे देंगे, right? So in breakfast, they all the family is eating fruits. Like at my home, breakfast is only fruits, no one else is eating anything. Maybe after that, in the afternoon or in the evening, they do eat something cooked, but breakfast, no cooked meals at all. So this has become a rule, right? So everyone knows, okay, they'll know, some child will pick up his coconut water. He will drink two, three, how much he wants. Someone will pick up apple, some custard apple, banana, whatever they like, right? So it's there on the table, and they'll come and they'll get it themselves. Okay, so this is there now. Okay, now Yogita ji has written intentions for mindful eating. I'm unable to, read this due to the writing. Lesser and lesser the nature and for its sustainability. So she has written something related to sustainability and Mother Nature, and she also wants to appreciate each and every bite, and show gratitude to people who are involved in making that bite reach to her mouth. Okay, yeah. So that's good. This is intention. Areas she wants to work is stress and anxiety again. Slightly fuller face. She wants her face to be slightly fuller. It's very thin. Okay. So practices she wants to implement is involving all my senses while eating. Okay, so isme you have to start doing it uh, like from the first meal of the day. Okay,
कि just sit down quietly and eat with your hands, smell the fruit, feel it, right? So you will be able to do this, implement this act. Then talking less while eating. Okay, so you don't have to talk while eating, right? Then chewing properly, showing gratitude. So these are very easy things to be implemented. So if Yogita ji, I think she's not here. So when Yogita ji will be seeing the session, then she may be replying in the group so we can guide her. Right. Thoughts, emotions, or physical sensations, leg and heel pain. Okay, she's having leg and heel pain that is there. Mixed emotions, both happy and sad. Underlying thoughts with continue working more and more for universe sustainability. Okay, good. So she's thinking about everyone, right? She's thinking about sustainability, about planet, about Earth. That's a good thing. So day one, she had custard apple, feeling were good and thoughts were happy. Banana smoothie, then she had water chestnut, then she had pomegranate, then last meal at 4 p.m. was idli and sambar. Okay, slightly gratitude. So with portion, it has on higher side. Okay, so I couldn't understand this, what she means by saying this thought. Acha, so the thought came that portion is too much. So whatever she ate as in cooked food, so the portion was more. This is what she means to say. So you have to understand. Okay, so today we will be now. Sunita ji, you want to say something? Can I kuch? नो मैम. ओ आपका तो आवाज ही चेंज है. हाँ मैम, मेरी तो एक आंख ही नहीं खुल रही पूरी. आखिरी कर रही है आपकी. कोई बात नहीं. जबरदस्त डिटॉक्स चल रहा है मेरा. ठीक है, चलिए. तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट overcoming cravings. ठीक है, understanding and overcoming cravings. So cravings is something which is a very big problem for everyone on this journey, है ना. सबको बड़ी परेशानी होती है कहीं ना कहीं से. अभी जैसे योगिता जी ने इडली सांभर खा लिया, है ना. तो दिस हैपेंस, राइट. सो अगर हम इसको समझ लें अच्छे से एंड चीजों को समझते हुए फिर हैंडल करें, so that is like overcoming cravings is a success or failure on natural diet, right? Either you will be succeeding or you may be failing. So if you will overcome the cravings, you will definitely be succeeding on natural diet. Okay, so here to understand this, we need to understand two basic things: where your cravings are coming from, okay, and why do you crave. ठीक है, तो पहला क्रेविंग्स कहाँ से आ रही है. So कहाँ से आ रही है means from where the cravings are coming, means that whether it is coming from, you know, your past memory with that food, okay, or it is coming from some you know, the sensual craving means like there was a smell of some particular food. You were going through some place and there was the smell of coffee outside when you went from the coffee shop. So you will have that craving. Oh, I must take it, right? Or it's like you saw, like what happens with kids. They see some advertisement, noodle is falling down and all those things, right? So you have to understand that all those things are just making you attract towards it, right? And actually that is not a good thing, right? So when that is happening, you will be able to understand your craving, that what kind of craving it is. Then there is other type of craving when, you know, like with where it is coming from emotions. Okay, so emotional craving or emotional eating is there, right? So you are happy, you are sad, or something happened. ठीक है, तो वहां पे भी what is happening, that emotion is bringing you the need to eat because already it your relationship with food is bad. ठीक है, आपने उसको उससे relate करके रखा है. तो and this is something which people have gained from movies and all. ठीक है, कि मुझे जब क्रेविंग होती है तो चॉकलेट खाने का मन होता है, खुश हो तो चॉकलेट खा लो,
है ना, खुशी बांटो, चॉकलेट खाओ, सैड हो तो खा लो चॉकलेट. सो ये सब देख देख करके सीखा हुआ है, देख करके आया हुआ है. ठीक है, यू हैव वॉच दैट एंड इट्स देयर थ्रू योर चाइल्डहुड, यू वर वॉचिंग राइट दैट कि हाँ वो दुखी होके बैठा था तो उसने उसको आके चॉकलेट दे दी तो वो सही हो गया. तो देन यू रिलेट इट विद योरसेल्फ आल्सो एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग द थिंग्स. Okay, so that is coming from there. You are doing emotional eating or emotional craving, it is. Then there is environmental craving also. Environmental craving means ki you are in that environment. Now, at your home only you are the person eating fruits. Everyone else is eating cooked food, right? Or you're going to party, you're going to some friend, right? So they are also eating cooked food. So that is like from the environment you are having a craving. Oh, ये चलो आज खा लेते हैं, क्या problem है, right? Let's eat today. Like Naresh ji was having some craving in the afternoon, so he called me, right? So after that you didn't eat, right? No, 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 very see, good. I did not. I did not eat after Very eating mindfully. So the cravings was you will be able to do it for 1 month, complete 1 month. Okay. Thank So you, thank today you, you will be determined. Okay. Yeah. thank you, More Ji. determination, more strength to you. Okay. Thank Yeah. you. Okay, so you need to understand from where actually that craving came. So craving came, you must have had a talk with some friend and he mentioned that, oh, today we had this and that. Or someone who is after you, why are you doing this? Why are you doing this? Don't do this. Okay, so he can insist you like my mother always insists me, oh, you eat this, right? So it's like when then we fall off for cravings and we eat sometimes and sometimes we don't. So if you are dealing with any physical condition, अगर कोई प्रॉब्लम है शरीर में, ठीक है, तो उस समय हमें फिर क्रेविंग्स पर नहीं जाना है. अगर आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपने हील कर लिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कभी कभी ठीक है, यू विल बी फॉलोइंग फॉर द क्रेविंग्स, दैट इज फाइन. बट in that case you have to identify how your body is trying to tell you the things. ठीक है, क्या डिहाइड्रेशन सा फील हो रहा है, जो भी चीजें फील हो रही है वो सब आपको समझ में आना चाहिए. You must be understanding. You shouldn't be going in that guilt phase कि oh I'm guilty, okay, and then start eating cooked food on daily basis. No, don't do that, right? So then why do you crave? This is also important to understand that why a person is craving. ठीक है, so craving क्यों हो रही है? Is it like something, some problem in the body or something else? So that also needs to be understood. Okay, so most of the times what I have listened is that there are three common cravings which most of the people share. So they will have salty or spicy cravings, है ना, कि कुछ salty और ना कुछ spicy सा खाने का मन हो रहा है. और दे विल से कि नो फ्रूट्स तो है बट मुझे और ज्यादा मीठा खाने का मन हो रहा है, स्वीट क्रेविंग. ओके, सो sweet cravings are there, salty cravings are there, and then fat cravings, right? कुछ nuts खाने का मन हो रहा है या कुछ वैसा fat सा खाने का मन हो रहा है, they'll say that, right? So these are the different kinds of cravings which people have. Okay, so now we'll understand each craving. Okay, craving for salt. So this is a craving for stimulation. Okay, तो ये जो है salty जो craving आ रही है आपकी, ये stimulation के लिए आ रही है. ठीक है, तो क्योंकि वो सॉल्ट जो था वो एक स्टिमुलेंट था और अभी तक आप उसको ले रहे थे, राइट? अब वो आप नहीं ले रहे हो, उससे क्या हो रहा था, आपको और ज्यादा एक्टिव फील हो रहा था, राइट? या बॉडी को एक स्टिमुलेंट मिल रहा था और जहां पर आपको आराम की जरूरत थी वहां पर वो बॉडी का साइन सिग्नल सप्रेस हो रहा था. ठीक है, so stimulant is something that works directly on the brain. Okay, so stimulant, what a stimulant does is it is going to create a heightened sense of excitement and alertness
which is actually not required by the body and which is not normal also. Okay, so whenever you're craving for salt, that craving is for stimulation, and salt is a stimulant. That's why you crave for that. Coffee is also a stimulant. Tea is also a stimulant. All these things are stimulant only. So what a stimulant does to the body is it has an immediate physiological effect. Okay, and it heightens your sense of excitement and alertness, and it is increasing the motor activity because the body starts to work to remove that toxin which has entered. Okay, so these are like this results in insomnia, right? If you'll continue to stimulate your body, फिर एक टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि नींद आना बंद हो जाती है. Alcohol is a stimulant, so you will not be able to sleep properly. Okay, caffeine is stimulant. Coffee and chocolates, all those things are stimulant, right? So slowly, you start it for some reason, and then you have a habit of it. You are addicted to it, and then your natural signs and symptoms of the body get suppressed. तो वो naturally नींद भी नहीं आती है और एनर्जी भी नहीं लगती है, right? You have to take coffee again and again for that energy, right? So when our body is fatigued and we don't offer it rest, we often look for a way to generate energy instead. ठीक है, so हमें काम करना है now. The like I am feeling sleepy but I have to work, right? So what a person does is, no, the person will go and the person is going to have some coffee. So he just had some meals maybe 2 hours ago. ठीक है, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले कुछ मील ली थी, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको वो खा करके ताकत मिली नहीं, क्योंकि वो मील में तो नमक और बाकी सारी चीजें थी जो शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए या जो शुगर चाहिए वो था ही नहीं, राइट? इट वाज रोटी सब्जी एंड ऑल, राइट? सो फिर क्या हुआ, बॉडी को एनर्जी नहीं मिली, तो अब वो कुछ और लेते हैं और फिर उल्टा बॉडी को और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी उस मील को भी मेटाबोलाइज और स्टेबलाइज करने के लिए. ठीक है, तो बॉडी की एनर्जी वेस्ट हुई, इसलिए आपको लो फील होता है, एंड देन यू want to sleep or you want to take rest, but you are in office, you cannot do that, you have to work. Okay, so what you will do, you will get a coffee to generate some energy, right? Some people go out and exercise for that कि चलो अच्छा थोड़ा टहल के आते हैं. पहले यही होता था हर जगह, जब when things were not easily, when coffee and all was not very easily available, people would just get up and go out and do some exercise. Okay, so some people like reach out for something salty. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज कि कुछ नमकीन सा मिल जाए तो बस अभी यहाँ थोड़ी सी वो एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, तो अभी भी जैसे लोग आते हैं ना जिन्होंने नमक नहीं खाया कुछ दिनों से, तो बोले यार हमने तो नमक ही नहीं खाया, हमें तो मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है जीवन में कुछ बचा भी है हमारे, राइट? सो दे विल से लाइक दैट. सो इट्स लाइक कि बचा है बहुत कुछ, अभी धीरे धीरे आपको आएगा, वो सही होएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा. अभी आप जितना काम कर रहे हो उससे डबल काम करोगे, बट लेट योर बॉडी हील फ्रॉम द इश्यू विच यू आर फेसिंग, देन ओनली it is going to show that, right? But if we can become aware of the underlying cause, then we have much greater control. When we recognize the desire for salt is a need for rest, we can alter our plans to address that need, right? So we need to basically rest at that time. हमें रेस्ट करना होता है जब अगर वैसा कुछ आ रहा है, तो आपकी वो जो सही बॉडी की का साइन है वो रेस्ट के लिए है. ठीक है, by getting more rest we eliminate the craving altogether. क्योंकि हम अभी का जो भी लाइफस्टाइल है उसमें वी आर ओवर यूजिंग एवरीथिंग, वेदर इट्स द मोबाइल फोन और वर्किंग एंड एवरीथिंग, राइट? तो इसलिए हमें ज्यादा थकान फील हो रही है, और ऑल टुगेदर बॉडी के पास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक अमाउंट ऑफ नर्व एनर्जी है फॉर अ पर्टिकुलर डे, तो उसके बाद आपको वो सुलाई देगा शरीर. ठीक है, तो आप अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो चीजें तो बीच बीच में छोटे छोटे नैप्स ले सकते हैं. अगर 5 मिनट रेस्ट कर लिया, सोए नहीं भले ही, बस सिर्फ ऐसे ही रेस्ट कर लिया. ठीक है, सो कमिंग इन टू दैट अवेयरनेस यू विल बी एबल टू स्टॉप this craving. Okay, you have to understand what your body is trying to communicate you. ठीक है, ये आप ही समझ सकते हो अच्छे से. I am sitting
so many kilometers away from you. I don't know what is happening. Okay. So in that moment when you are feeling salt cravings, so instead of coffee, tea and all, what you can do is you can keep spinach, tamarind, celery, tomatoes, cucumbers, coconut water, or simply drink some more water. So this is will be satisfying your salty cravings. Okay. So these things can be used for salty cravings. Okay. Then cravings for sweets. So craving for sweet are most commonly a lack of available energy. Your body is lacking available energy. Our bodies require sugar to run every single cell. So body को sugar चाहिए होता है सारे cells को function करने के लिए. If we are under feeding on fruit during the day, we will often crave sweets after dinner. ठीक है. So अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे हो पूरे दिन भर में अच्छे से, तो आपको बहुत ज्यादा स्वीट वो खाने की इच्छा होगी. So you have to eat nicely. Okay. When we are on cooked meals, digesting a high protein or high fat meals is a drain on our energy supply. ठीक है. तो जब हम cooked meals पर हैं, तो जो हाई प्रोटीन हाई फैट मील्स हमने ली है, उसमें हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है बॉडी की. ठीक है. तो the body will be looking for more sugar to utilize as energy if we eat those heavy or dense meal. तो क्या होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, है ना. सब लोग अपना अपना मीठा बेचते हैं खाने के बाद. कोई आइसक्रीम बेचता है, कोई चॉकलेट बेचता है, कोई कुछ, राइट, मिठाइयाँ. सो खाने के बाद वो मीठा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो खाया उसने तो एनर्जी दी नहीं बॉडी को, उसने तो एनर्जी यूटिलाइज ही करवा ली उसको डाइजेस्ट और असिमिलेट करने में. फिर वो ग्लाइकोजन बनाएगा, फिर वो बाद में यूज होगा. इमीडिएट चाहिए था, इजी वे में चाहिए था. ठीक है. तो वो नहीं मिला. If we increase our fruit intake earlier in the day and add more dense fruits like bananas, custard apples, or dates, we can avoid these cravings for sweets after dinner. If you are having these kinds of craving, then this is what you can do. Sweet cravings can also be an indication of a need for sleep. Again, sleep की need हो सकती है. ठीक है. So I have noticed my son who eats more of cooked food. Okay. So he will always like he is going to sleep. He's feeling sleepy. But he will say, "नहीं मुझे कुछ खाना है." And कहते he will sleep. He's saying, and I'll say, "Okay, I'm giving. Just to try to close your eyes and sleep," because I know that he has already eaten, but still he's asking. So I try to avoid giving him. But I say, "Okay, I'll give you. Just try to close your eyes and lie down." So he'll say that. Ki do, and I'll be working. I'll be saying, okay, yes, I'm bringing, and he will sleep within 5 minutes without eating anything, right? So that happens with us as well, and we are not able to listen, and we have something, and we will just reach out and we will eat. Okay. So you have to avoid that. So first thing is like you can try and have a nap. But yes, when you are working in office, you cannot always go and nap, isn't it? So for that, you can use the first advice which is given, having more dense fruits and the sweeter ones. Okay, so that you don't have those cravings. The body will ask for more sugar to produce more energy if we try to force the body to stay awake when it needs rest. ठीक है. तो रेस्ट चाहिए शरीर को, और हम चाह रहे हैं कि वो अवेक रहे, तो हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी फिर, और इसी के लिए बॉडी को शुगर चाहिए होती है, इसीलिए आपको शुगर की क्रेविंग्स आ रही है. ठीक है. Going without adequate rest long term will train our body to demand more energy. ठीक है. Instead of giving in to cravings for cookies, candies, ice creams, reach for bananas, dates, mangoes, watermelons, and small quantities of dried fruits. Also, you have to increase your water intake. Okay. So then craving for fat. Cravings for fat are most commonly used as a depressant or emotional suppressant. So fat is something that takes a lot of energy to digest. Okay. They weigh us down, they make us sluggish. Right. So as a society, we have trained ourselves to drink coffee or tea and eat chocolate and salt all day long to stimulate and hype ourselves up. Right. Unfortunately, what goes up must come down. When we are stimulating ourselves to stay awake all the day, we drive a need to come down at
राइट, ठीक है. सो द थिंग इज दैट ये जो फैट वाली क्रेविंग है, ये मोस्टली क्या होता है जब बहुत कोई मतलब एज अ डिप्रेसेंट, ठीक है, एज एन इमोशनल सप्रेसेंट लोग यूज करते हैं. तो क्या होता है कि जब बड़े दुखी से हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ फ्रॉथी सा मिल जाए, है ना, कि मोस्टली क्रीमी क्रीमी सा चाहिए होता है लोगों को, है ना, कि क्रीमी और स्वीट हो. सो दिस हैपेंस, बट दिस इज समथिंग जो अगेन हमारे सिस्टम को स्लगिश करेगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो वेस्ट होती है फैट के को डाइजेस्ट करने में, एंड यू आर नॉट गेटिंग द डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम इट. So in the evening, we reach for fat-laden dessert to calm ourselves down, right? This habit can carry over even when we start making healthier choices. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि मैं पूरा दिन तो फ्रूट खा लेती हूँ, लेकिन रात को मुझे कुछ ऐसे चाहिए होता है, तो मैं ये गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है, ठीक है. So all these things happen with them. So we also commonly use fat to suppress emotions. Yeah. Fat is very dense and takes a lot of energy to break down. When a craving for fatty junk foods hits, take a moment to walk away from the food, sit somewhere quietly, and ask yourself, how are you feeling? Okay, often there is a stress or emotion that needs to be addressed and reconciled. सो एक्चुअली वहां पे भूख नहीं लगी है या शरीर को नीड नहीं है, सो दैट्स नॉट द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, it's the emotional aspect. So once your emotional aspects are clear, if your stress level is not there, if you're not stressed about anything, then this craving will not come. Okay, taking 30 seconds to check in with your emotions can often resolve whatever thoughts are creating discomfort in the body. If you are still feeling the fat craving after a check-in, grab yourself a handful of nuts, seeds, avocado, or some coconut. So these are the options which can be used if you are having fat cravings. But before this option, you have to work on this. ये नहीं कि बस craving हो रही है तो बस इसी पे ही सीधे आओ. पहले ये भी देख लो कि क्या है, ठीक है. एंड उसके अलावा मतलब रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ क्रेविंग, चाहे वो स्वीट की हो, सॉल्टी की हो, या फैटी के फैट चीज खाने की क्रेविंग हो, देयर आर सम थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू ओवरकम अ क्रेविंग. सो फर्स्ट थिंग विच यू विल डू, जब आपको पता है कि यहाँ सॉल्टी ये खाने की कुछ खाने की सॉल्टी क्रेविंग हो रही है, लेकिन आपको तो ये पता है कि दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है, एंड दैट इज नॉट योर आइडियल फूड, ये भी अभी आपको पता है. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रिंक वाटर. पहले आप पानी पियो, ठीक है, पानी पियो. और लाइक क्योंकि ज्यादातर जो क्रेविंग्स हैं वो हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उससे कनेक्टेड है. Okay, most of the cravings are connected with dehydration, and we are often dehydrated when we feel fatigued. So being properly hydrated helps the body create and utilize energy more efficiently. It also helps to dilute toxins and helps improve eliminations, which means less energy is drained in the digestion of our meals. ठीक है. तो जब हम अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे, देन these cravings will not be there. Or if you'll simply drink water, this many people have shared this with me कि हाँ इसको पीने के बाद जो है, पानी पीने के बाद फिर वो craving चली जाती है. ठीक है. So you have to try all these things. Second thing is get some rest. A nap for short as 10-15 minutes can recharge us to face the rest of the day. Even if you cannot sleep, just taking 5 to 10 minutes to sit in silence can be very helpful as well. Okay, so just you need to just relax. So actually craving जो आ रही है तो एनर्जी की कमी हो रही है, उसीलिए आ रही है, ये समझना है. और एनर्जी की कमी तभी हो रही है जब हम कुछ अननेचुरल कर रहे हैं या बॉडी कुछ हील कर रही है, ठीक है, उस समय भी हो सकती है एनर्जी की कमी, बिकॉज सिस्टम इज डिहाइड्रेटेड. सो दे कैन बी टू थिंग. ठीक है. सो यू हैव टू वर्क ऑन बोथ. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू. Go for a short walk, change your location, get some fresh air, get out in the sun, take few minutes to move your body, take a break from technology and connect with nature, right? So क्या होता है, खाते बैठे बैठे भी आती है कि बोर हो रहे हैं तो खा रहे हैं, है ना, बोर हो रहे थे तो खा लिया. सो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर. सो हियर यू कैन
identify the things what you have to do. Okay. So now we can take more questions. I think मंजुला जी ने अभी शेयर किया है that I want to improve my healing level, cleaning level, eating fresh fruits. I want to reduce stress. I want to reduce my anxiety. सभी को स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी क्या होता है? जिसको है उसी से पूछते हैं। चलिए नरेश जी आप बताइए। मंजिला जी आप भी you also switch on the camera so we can talk to you. Hey, just a minute. Wait, let me put on this chart. Charging the laptop. Yes. So what is this stress? सबने stress और anxiety word लिख दिया. Anxiety क्या होती है? What is anxiety? Yeah, shall I go first? Okay, I go. Stress, like I feel like there are too many tasks coming into my mind. Like I need to do this. If I did not do exercise, oh, I have to do exercise. And after that, after doing exercise, I feel, oh, I did not had any fun time today. I did not watch any comedy or something. I need to watch. And after that, I feel I did not do exercise. Oh, I need to do exercise. And there, end of the day, oh, I did not got any time to talk to my family. So it all builds up, and then हाँ. oh, I could have done it better. Maybe tomorrow I will try to do again. So Okay. yeah, that kind of pressure. And in office also we have some work, right? Office is a different thing. Okay, we give 8 hours rental, ourselves rental to the office, so we Yeah. do. But when come to home, then this is a feeling like, okay, today I do too many tasks, but I did not enjoy my time. I did not watch Hmm. something like that. I feel so. Okay, so it's like it is something which we can understand because we are living in some unnatural conditions that we have created for ourselves and which have now become essential for living, right? So, but actually we are designed to just relax, live in jungles, pluck your fruits, and enjoy, be around nature. But we are not doing that, right? So that's why we are having these, and there are, and people have lots of expectation from us. We also have some expectation from ourselves that, oh, I must be doing this and that. And also, there are some physical conditionings, okay, the conditionings from the society, right? That, oh, you must be doing this, you must be doing that, you must be maintaining this kind of house or this kind of your you like person must be well tied, the hairs must be tied well and all. For girls, if I say, right, must be wearing the sari this way, that way. So all these things are there, right? So here what you have to understand is that what are what things are important from that. Like, okay, talking to the family is important somewhere, right? So you just set some timings and something for that. Okay, if you are busy in your work which you enjoy, which you are thankful that thank god I have got this work, so I am able to earn money and I'm able to take care of my family and the financial thing, right? So you have to be more thankful about your what you are doing, right? So because maybe there is a person who has same qualification like you, but he's not able to get the job or get that particular thing, and he also has a family to feed, right? So this is something which will uh, help you feel a little bit better. Then for talking to the family, what can be done is that, okay, this day around this time I will talk. So maybe 3 days or maybe 4 days, 4 days in a week I'll make, right? And when you are free, then you can immediately do it. So the sooner you do it, what you can do is make it, or you can make it a habit of calling in the morning only. So वो स्ट्रेस ही नहीं रहेगा दिन भर जब आप पहले सुबह ही बात कर लोगे. सो यू नो दैट, ओ मैं तो बात करके आया, तो वो चला जाएगा दिमाग से. ठीक है. सो बेसिकली एंजाइटी इज a disorder. ठीक है. It is a group of mental disorders which is characterized by some
uncontrollable emotions and feelings. ठीक है? So that will be very intense. So we can understand it as in a way that it's an intense, excessive, and persistent worry and fear about everyday situation. So, how intense or how excessive or how persistent is your worry and fear will decide whether you have anxiety or not. So, it's not most of the times people don't have anxiety, but this word is so common that we use it. Yeah, It's only worry or it's only, like, oh, I couldn't do this. So, that's okay. You just eliminate this word from your life. दैट इज इम्पोर्टेंट. ये शब्द को हटाओ, एंजाइटी को. एंजाइटी क्या होता है? कुछ नहीं होता एंजाइटी. एंजाइटी शब्द को बाहर निकाल के फेंकना है, तो अब एंजाइटी अपने आप ही चली जाएगी. ठीक है? और जो करना है उस पर फोकस करना है ना. इफ यू आर हैविंग, इफ यू, आपको बार बार थॉट आ रही है ड्यूरिंग योर वर्क, ओके, आई हैवंट टॉक टू माय फैमिली, right? So in the morning only, before go or while going to office, just call them. Okay, what's up? I just wanted to call and check in this, whatever you want to talk. So it's done. अब वो आएगी नहीं thought. When the part will be done, then how you will be feeling that, right? So this way you will be able to solve it, और फिर वो worry सारा चला जाएगा. ठीक है? Basically anxiety को, अगर सच में जिसको anxiety होती है, so the real cases of anxiety, what happens in that, the feelings or the situation is so intense, so excessive, and so persistent, the worry and fear, that the person has fast heart rate, rapid breathing, sweating, and the person feels tired immediately. There will be a lot of tiredness. ये आपको हो रहा है? नहीं हो रहा है? नो, उतना ज्यादा नहीं. योग्यता जी मंजुला जी से भी पूछेंगे ये हो रहा है, नहीं हो रहा है. सो अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपको एंजाइटी है ही नहीं, बस आपने वो शब्द पकड़ लिया है, शब्द को पकड़ के बैठ गया. ठीक है? सो एंजाइटी नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक एंजाइटी विद यू. इट्स जस्ट सिंपल वरी, और सिंपल दैट कुछ some things are not going the way you want it to be, right? Or so you have to work on that. That's basic thing, nothing else. Because in anxiety a person feels very nervous, restless, and tense. Okay. And as I said, like they will be trembling also, sweating also, breathing rapidly, and heart rate will be increased. So if, when all these things will happen, if अभी अगर आपके कमरे में सांप आ जाए तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, पसीना भी आ जाएगा, राइट? या शेर आ जाए सामने, या कुछ डरावना सा देख ले. सो in that like circumstance it can be there. But right now what is happening, we cannot declare you as that you have anxiety. No, you don't have anxiety, nothing. It's just simple worry. Okay, it can be overthinking also, or it can be not able to manage the tasks properly. तो क्या होता है कि हम अपनी बुराई नहीं करना जानते हैं. मतलब अगर हम ये कह दें नहीं हम तो कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो हमारी कमी हो जाती है. तो वो लोग उसको एक ऐसा टर्म दे दो एंजाइटी का जो सबको कंफ्यूज हो जाए. ठीक है? एंजाइटी है? नहीं, कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग, बिकॉज एंजाइटी इज अ वेरी big term and it has some signs and symptoms. So if you're not having that symptom, we cannot call ourselves as being anxious. Okay. So I don't think so Manjula ji और योगिता जी also have any anxiety. किसी को भी कोई anxiety नहीं है. ठीक है? It's just simple stress and simple worry about the things. So that will be solved out if you will start working on the cause and if you will start taking actions basically. ठीक है? So okay, this is it. Now so Manjula ji is feeling happy with her achievement. In 2 months she has written that I am different from others. Daily eating habits are different, so she's happy about that as well. Okay, that's good. Nice. उपमा वर्मा जी ने भी लिखा है माइंडफुल ईटिंग उपमा वर्मा जी को खुशी के लिए करना है.
उपमा वर्मा जी है यहाँ पे? नहीं, मंजुला जी तो। Yes, Manjula ji. How are you? Yeah, fine. I'm fine. I'm very happy. I'm fine. Happy and smiling. Okay, Yeah, 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 nice. very true. Yeah. I love to Very see true, all ma'am. the smiling faces. Yeah, sure. Yeah. When you all smile, I dance. Okay. So Yeah. I smile a lot to make you dance. Yeah. So okay, so just tell Okay, me like ma'am. what is the stress? What's the stress for No, 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 you? no, no. I Gen feel sometimes I feel stressed about my BP, like only. BP and Not all. much of anything. Only slightly due. Sometimes the BP will go high. Hi. Maximum is reduced now, but sometimes it goes nearby 175 or 180 or something like that. That time, that's what I'm saying as an anxiety Don't and worry stress. about that. That's fine. Don't worry Yeah. about Oh, the BP now. Just you, whenever that yeah. happens, if the BP is high also, you just Okay. quietly lie down, relax, and close your eyes. And just notice how you are breathing. You don't have to do Okay. any deep breathing or anything. Just how your normal breathing is going on. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Relax yourself. Just try to Okay. relax yourself. Okay. Yeah. Nothing else to be done. But I will be looking only normal. But if I check that NBP machine, it shows that the measurement will be like that. But See, I sometimes the personally feel BP. I'm very okay. Yeah, so you have to go more with how you are feeling rather than what's coming on the reports or on the numbers, what we are doing, right? So this Okay. we have seen this, like, the person is normal and reports are not, or the BP is showing high, but sometimes it happens the machine is not working properly. It gives high. No, I got a new one actually from last month only. That would be okay then. But if Maybe you're feeling fine, if you are not no. having any problem, if sweating is not there, if you are feeling okay, everything is Okay. so no need to So worry about that. Okay, yeah, okay. that the Thank you. body is still in healing mode. The body is still It's healing. working. Yeah. Sometimes it may be spiked due to some reason, something going in inside the system. Yeah, I understand. Yeah, Yeah, so true. that is what will be happening. So nothing to worry. Okay. So you are able to eat mindfully, you are able to enjoy your food more, you are eating with your hands and all your Yeah, senses. yeah. I feel I eat only by chewing it nicely. I enjoy the sweetness of the fruits. Mm. Everything I like it actually. I love only the sweetest fruits actually. Banana, whatever you said, banana, mangoes, everything. Okay, that's good. Just now, just after before 2 months only, I joined with your group actually. Yeah. Now I felt why I can't know this about before some 10 years back or some 5 years back. Now I'm Yeah. feeling very bad about that. Yeah, it's very late to come to know these things, good things. It's very hidden, no? The good things are hidden from our eyes. Yeah, actually, Before, this is something which was there when Hitler was there. Okay. So yeah, at that time, all the natural hygienists, they have written all these things, all the researches they have done, whether it is Anthony Beecham or this mm, T.C. Fry and all, right? So Dr. Herbert Chilton, all the natural hygienists have written. But the after this Rockefeller Foundation, which started medicine business, so yeah, yeah, they have all yeah, suppressed everything, and whatever you will find now is something which is very confusing and which is going to take you to a different way. And that yeah, was what you were suffering from, taking so many medicines. Still, BP was not normal, sugar was so high, right? You were also feeling that way. Now you have stopped everything, started this journey, so you are able to make out the difference. yeah, yeah.
Seen my report, no? The day before today, I sent to the group actually, to you also. Yeah, I am yeah. very happy. Yeah, the second time I'm doing this blood test, my Uh, results are very, very, very good. I'm very happy. Family also felt very happy about me. mm. And eating fruits, they are also now eating 2 times fruits in a day. One time only they're having the cooked food. They also Oh, that's changed. Yeah, that's my kids also have changed. Yeah. well, Per day congratulations. we have only 2 meals. In that meal, they change to one meal as the fruits. Nice. That's nice. So That's they good. also got the awareness. Yeah, I'm very happy. Yeah. good. That's good. So now you can make a good Thanks to you and yeah. yeah. Pardon? No thanks Tell to me, me. ma'am. Thanks to fruits and No, no, thanks no. Yeah, that for you your are able guidance, to I do have to it. thank. Nothing more. Uh-huh. Nothing, ma'am. So I have to anyway. I have to thank you and Gaurav sir also. I didn't know about him much, but I thank the founder of this group actually, you too, and the universe, whom the universe only connected me to this group actually. Without that, I can't find out this. I can't found this group. So I'm very overwhelmingly saying this. I am very blessed actually because I'm searching for a long years. I was searching for some solutions without any medicines or without any thing. I'm searching like that only. I'm searching in YouTube or in some others with other people. I'm asking, but no one knows about these things. They will say we can eat fruits, but it will give an fatty liver, something like that. So I'm very afraid to have fruits as a diet, full diet, because that day when I ask you, no, if I haven't fruits, whether I will get the fatty liver, but you said no, it's a myth actually. After that only I gotten confident to have these fruits in my diet, in my day-to-day diet. So it's I am very blessed. I think I am blessed to be in this group Just continue because your of this. journey like Yeah, this. yeah, sure. Do some Because exercises and all as well. sometimes in 2 months, sometimes I hadn't cooked food because No of the problem. cravings, only rice cravings. No But problem. during that time, actually, I felt very, what to say, is very little bit hard to digest or something. It is not good for my body. I felt that. So I Yeah. am coming out from that craving also. What is the meeting is said you did today is very useful to me. The cravings, I have to stop, how to come out from the cravings. It's very useful to me. Yeah. So only I joined today. Yeah, definitely. Thank you, So ma'am. just use those techniques and Yeah, continue your sure. journey. Anything, any problem, anytime you can reach out and Yeah, we'll yeah, help yeah. Sure. in Sure. touch. Thank you, ma'am. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Upma Verma and Rahul Gupta. राहुल गुप्ता बोलिए आप तो अनम्यूटेड ही हैं. गुड इवनिंग मैम. हाँ, गुड इवनिंग. आपने मैम, होमवर्क किया कि नहीं किया? हाँ मैम, मैं जो पिछले 28 दिन से जो कर रहा हूँ मैं फ्रूट डाइट, तो अच्छा. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. और मेरे को आज एक मतलब प्रॉब्लम आज एक ये आया मैम. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आती है मैम. 15-15 घंटे सोता हूँ मैं, और थकान रहती है, चक्कर आते हैं, और दिमाग काम नहीं करता, मतलब फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है अभी. तो अब मतलब आज 28वां दिन है मैम, और इसके लगभग 1.5-2 महीने बाद मेरे एग्जाम्स होने हैं कुछ मैम, कंपटीशन एग्जाम्स होने हैं टीचिंग के. तो मैं मतलब अब क्योंकि एग्जाम्स की डेट आ गई है, मैंने चेक किया, तो मैं मतलब मेरा माइंड और कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है स्टडी पे. तो और सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मैम, और मतलब मूड स्विंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. दवा की डोज मैंने कम करी है, लेकिन उससे मतलब अभी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया है. फूड डाइट पे इतना हुआ है कि मेरा वेट कम हुआ है मैम. और पहले ये था कि नींद वगैरह इजीली नहीं आती थी, तो अब पहले कई गोलियां लेनी पड़ती थी, तो अब सिंगल डोज मेडिसिन लेता हूँ तो उसमें भी नींद आ जाती है. ये फायदा हुआ है. बट अभी मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि मैं कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी स्टडी पे. और ये
क्या इसके लिए मैं नमक खाता हूँ फूड के साथ, तो प्लीज मुझे कंसंट्रेशन क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है। कंसंट्रेशन और फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज पे? क्या प्रॉब्लम है? मैम बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो कोई दिमाग बात ऐसे लग नहीं, रहा है एक काम काम करिए। हाँ ठीक है, एक काम करिए, बहुत ज्यादा सोचिए नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत करिए उस पे। एक दिन या 2 दिन अच्छे से सो लीजिए, ठीक है? अच्छा जब आप एक दिन कुछ मत करिए, सोइए केवल। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, कुछ नहीं करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ मैम खाइए मैं और सोइए। मैम मैं सोता तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, दिन में भी सोता हूँ, रात में भी सोता हूँ, बट 28 दिन हो गए हैं मैम, अभी तक डिटॉक्स नहीं आया। और मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि सॉल्ट की इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि सॉल्ट के बिना मतलब मूड स्विंग्स होने लग रहे हैं मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अंदर से बहुत दुखी फील कर रहा हूँ कि सॉल्ट नहीं मिल रहा बॉडी को, बॉडी उसकी मैं क्रेव कर बोल रही रही है थी कि ना कि सॉल्ट नहीं मिल रहा है तो लोग आते हैं, तो आप अभी देखो, सॉल्ट नहीं चाहिए, आप पालक ले लो। पालक, टमाटर, इमली, ठीक है, खीरा, ये सब आप खाओ। आप इमली खरीद लीजिए, ठीक है, और इमली के ठीक है टुकड़े मैम। को, जैसे ही आपको ऐसा फील हो, लो फील हो, इमली के टुकड़े को मुंह में रख के एंड जस्ट जैसे टॉफी खाते वैसे हम्म। उसको च्यू करते रहिए, ठीक है? ठीक और है। और अभी बिना बिना किसी चिंता के कि कल क्या होगा, कल मुझे पढ़ना है या क्या होगा, आज में अच्छे से सोइए, अच्छे से रिलैक्स करके एकदम बढ़िया से सोइए, पूरा दिन भर एक दिन दे लीजिए सोने के लिए। जीवन का एक दिन तो सो लें, ठीक है? यस मैम। फिर चिंता करेंगे, कल उठेंगे तो देखा जाएगा। कल की चिंता कल की जाएगी, आज करके क्या फायदा? हाँ मैम, और बॉडी में जो एनर्जी नहीं लग रही है मैम, ये कब तक ऐसा रहेगा मैम? आज 28 आपकी दिन है। दवाइयां चल रही है ना, आपकी जो मेडिसिन चल रही हैं उसके कारण ही आपकी ये स्थिति पहुंची है। अच्छा। मेडिसिन आप काफी टाइम से ले रहे हैं ना? यस मैम, मेडिसिन मैं लगभग 10 साल से ले रहा हूँ। हाँ, तो 10 साल से डिप्रेशन और ये सारी जो भी दवाइयां आपकी चल रही हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है। आप और ज्यादा ओपन अप होइए, थोड़ा आप और ज्यादा अच्छे से किसी किसी से डिस्कस करिए। आप नरेश जी को कॉल कर लीजिए, आप नरेश जी से डिस्कस करिए, वो आप उनको अपनी परेशानी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है? फोन पर डिस्कस करिए। आप नरेश जी इनका नंबर ले लीजिए, ट्राई टू हेल्प हिम आउट दैट व्हाट इज द रीजन फॉर स्ट्रेस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन, ठीक है? ठीक है राहुल जी, यू कैन कॉल मी, मेरा नंबर ग्रुप में है, मैं अभी मैसेज भी डाला हमारा ग्रुप में। यू कैन टेक माय नंबर एंड यू कैन कॉल मी, आई विल ट्राई टू हेल्प माय बेस्ट। अच्छा, बस एक क्वेश्चन पूछना था हाँ कि जैसे आप बोले इमली तो खा ही सकते हैं, तो वो छोटा जो आम का टिकोला होता है उसको भी छील के खा सकते हैं मिला के सैलेड के साथ ऐसे? मतलब आम, कच्चा आम? हाँ, वो टिकोला जैसा नहीं, छोटा छोटा, जब रॉ रॉ मैंगो वैसे बिना कुछ मिलाए हुए, आम खा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत खट्टा नहीं होता है एज सच, तो वो खा भी सकते सैलेड में मिलाया जा सकता है ना? खा सकते हैं। इवन एक ना वो गार्डन में हम लोगों के हार्ट शेप की छोटी छोटी लीव्स होती हैं जिस जो खट्टी सी होती हैं, खट्टी मीठी सी होती हैं। तो वो हाँ, याद क्लोवर, नहीं है नाम, हाँ। हाँ, क्लोवर सीड्स की वो होती हैं, तो वो भी अच्छा, खाई जा सकती हैं। वो भी जो है हम सैलेड्स में भी डाल सकते हैं और उसको भी खा सकते हैं ऐसे। ओके, अच्छा, थैंक यू। मैं नोट कर लूंगा। नंबर आप नरेश जी अपना नंबर बोल दीजिए तो राहुल जी विल नोट डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर। +65 सॉरी। +65 +65 +65। 855 सॉरी। 855 855 855 67 670 67 044। 044 +65 855 670 44। हाँ, राइट। तो ये बाहर रहते हैं। ओके। थैंक यू हाँ, मैम। तो थैंक यू मैसेज नरेश जी।
करके और फिर उसके बाद व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इनसे बात करिए, अपनी परेशानी बताइए, व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम, और आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। और मैम एक और लास्ट चीज, मेरा बाकी डिटॉक्स आप मेरे ग्रुप अभी में तक हैं नहीं आया। राहुल जी? यस मैम, ग्रुप में हूँ मैम। मैम अभी तक डिटॉक्स नहीं आया, उसके लिए मैं क्या आप करूँ? आप ग्रुप में एक बार हेलो, मेरे जिस भी ग्रुप में हेलो करिए। मुझे लग रहा है आप मेरे ग्रुप में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। और आप लोग एक अपनी फोटो भी भेज दिया करिए, तो फिर एक दूसरे को आप ही लोग पहचानोगे, दैट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। तो यस, उपमा जी आप बताइए। मैडम बहुत अच्छा रहा दिन। वैसे तो हम पिछली नवरात्रि में यही मार्च अप्रैल वाली में 9 दिन का रख चुके हैं फ्रूट्स पे। तो केवल हमको नमक की क्रेविंग हुई थी, और वो भी इतनी नहीं, 9 दिन बीत गए थे। केवल सिर दर्द हुआ था बस। हाँ, हमें थोड़ा मीठा लेना पड़ता है, जैसे खजूर। अभी भी हम मॉर्निंग में खजूर लेके लीजिए पानी ना, कोई पीते दिक्कत नहीं है, आप लीजिए मीठा। और हैं जी। आपकी भी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। हाँ, पानी बढ़ाया है मैडम, आज तो 3 लीटर कर दिया है अच्छा जी। अभी तक 3 हो चुका है मतलब। अच्छा अच्छा, अभी हाँ। तक वेरी बाकी गुड। एनर्जी तो मैडम खूब है, दीपावली की सफाई कर रहे हैं, लेकिन कोई थकान नहीं है। लग रहा है 10-11 बजे तक चल जाएंगे आराम से, कुछ भी काम करते रहेंगे। तो बस मजे करिए अच्छे से, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, जी। आराम अब से। ये आपने और अच्छा बता दिया कि अगर नमक की क्रेविंग हो तो हम वो ले सकते हैं, इमली ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा क्लू मिल गया। इमली ले अच्छा सकते ये, हैं, टमाटर खीरे ले सकते हैं, हाँ, पालक ले सकते हैं, सभी कुछ से आपको हो जाएगा। हम पीनट कल खाना चाहते हैं, थोड़ा सा खा सकते हैं? कल पीनट क्यों खाना चाहती है? दरअसल वो जो उबली वाली खाई जाती है ना, बॉइल्ड, उसका सीजन है अभी। वो आई हुई है, वो रखी रहेगी तो बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी। जो भी घर में आया हुआ है बेकार रखा है, वो आप ही क्यों इससे जाता है क्या? नहीं, हमको पीनट पसंद ही बहुत है, खा नहीं रहे वो अलग बात है। थोड़ा सा ले लेंगे, ज्यादा नहीं। कितना लेंगे? बस इतना। इतना? इतने से कहीं इतना ज्यादा हो जाएगा तो आपको कोई ना कोई डिटॉक्स आ जाएगा, वोमिटिंग आ सकती है, गैस बहुत ज्यादा बच सकती है। तो आप ठीक है, इतना सा ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं बस है। इतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ये उसमें इतना। ठीक है, नमक नहीं होना चाहिए। और हाँ, नमक नहीं। उसको खाने के 4 घंटे तक आप, चार एटलीस्ट 4 घंटे तक आप जो है कोई भी ऐसा सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाइएगा, मतलब कोई मौसम्बी संतरा मत खाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बहुत उल्टियां होंगी, बहुत गैस बनेगी, और आपको लगेगा कि हार्ट अटैक ही आ रहा है, फिर सब लोग डर जाएंगे आपके घर में और आप हॉस्पिटल में ठीक है। एडमिट कराने चले जाएंगे, और सब आपका बंद करवा देंगे जो भी आप। ठीक नहीं, है, बस वो तो केवल पीनट ही खाएंगे, थोड़ी सी बस, जो बाकी है कुछ नहीं। खाइएगा तो वो खाने के बाद कुछ भी, मतलब 4 घंटे तक फल वाला नहीं जी। खाइएगा। 2-3 मतलब बनाना को खा सकते हैं, बनाना से दिक्कत नहीं होती है, बट कोई भी मौसम्बी संतरा जैसा कुछ मत खाइएगा, एप्पल भी नहीं, ठीक ठीक है। है, ठीक। ओके। इसका ध्यान रखना। थैंक यू मैम। ओके। नीता जी, आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए, आपको इतने सारे डिटॉक्स मिले। हाँ। वही राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं कि उनका डिटॉक्स आ नहीं रहा। मैं बोल ले रही हूँ लो मेरा हमसे, जा नहीं हमसे रहा। ले लो मेरा डिटॉक्स, मेरा जा नहीं रहा। हाँ, मुझे लग रहा है आंख में तो ना वो कंजक्टिवाइटिस वही हो रहा है, क्योंकि अच्छा। इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा बिल्कुल भी ना। हाँ, और तो एक मैं सेकंड, बीच में तो आप जब तक किसी और से बात कर सकते।
हाँ सुनीता जी बताइए। मैं ये बोल रही थी कि अब वाटर डाइट से भी ना आंख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फीवर तो मेरा उतर गया था, बट कोल्ड कोल्ड भी जैसे हो ही रहा है। तो मुझे लगा शायद कंजक्टिवाइटिस ही लग रहा है। तो पर एक चीज कल मैंने नोटिस की, बिकॉज कल फैमिली का गेट टुगेदर था, तो डिस्ट्रैक्शन और हैप्पीनेस से मतलब हीलिंग, वैसे इंटरनल हीलिंग बहुत होती है, मन की हीलिंग बहुत होती है। नहीं तो कल सुबह तक मेरी हालत बहुत खराब थी, बट वहां जाकर मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। और उसके बाद मुझे फील नहीं हो रहा कि ऑल्दो मुझे दिक्कत अभी भी हो रही है, बट डिस्ट्रैक्शन से बहुत फर्क पड़ जाता है। सबसे मिलके वो जो होता है ना हैप्पीनेस एंड ऑल, वो तो होता ही है। वो तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है अपनी बीमारी से, बीमारी में। इसलिए मुझे लगता है घर में नहीं बैठना चाहिए क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीमारी जिसको है वो अगर अपनी बस बीमारी को दिन रात देखता रहता है ना, राइट। उसको और ज्यादा बीमारियां ही घिरती चली जाती। वही कल इसीलिए मैंने ग्रुप में भी मतलब हार के डाला कि आंख का क्या कुछ है या। पर फिर भी अब लग रहा है ठीक है। आई थिंक अगर है, आंख आई हुई है तो टाइम के साथ जो बॉडी जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। फंसा हुआ है अंदर, धीरे धीरे शायद निकलेगा। आई थिंक धूप में कल बैठती हूँ, धूप में शायद थोड़ा और मेल्ट होके बॉडी छोड़े। हाँ धूप में आप लेकिन बैठे, धूप में जो मौसम भी ठंडा हो गया इधर ना थोड़ा सा। अगर आपको अंदर से धूप में बैठने में अच्छा लग रहा है तो आप धूप में बैठना। और डिस्ट्रैक्शन जो जैसे था उस तरीके से जितने ऑफन डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान लो आप कल किसी को बुला लो अगर,
कि भाई आज आ जाओ मेरे घर पे, मिलते हैं बैठते हैं, या ऐसे ही जो भी आपको अच्छा लगे करने में। तो वो जितना ही हम कम ध्यान देंगे ना उस चीज पे, उतना ही वो जल्दी सही हो जाती है। मतलब मुझे भी इस जर्नी में जैसे बहुत सारे डिटॉक्स आए। एक बार मुझे मुझे सबसे पहले तो रेड रेड पूरे स्किन पर वो दाने दाने जैसे आए थे, छोटे छोटे, पे पैरों पे हर जगह। तो वो आए। फिर ये माउथ के इधर इधर में जो है वो कट कट सा हुआ था, वो भी हुआ। मैं ध्यान ही नहीं देती थी कि हाँ ठीक है सही हो जाएगा, क्या करना है, और लोगों की प्रॉब्लम्स देखते रहते थे, क्या टेंशन है क्या स्ट्रेस है। तो वो अपने आप ही सही हो जाता था, उस पर उतना ध्यान जाता ही नहीं था। और तीसरे चौथे पांचवे दिन ऑलमोस्ट मुझे 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगा किसी भी चीज में। इवन मेरे पैर पे स्कूटी भी गिरी थी, पैर में भी हुआ था प्रॉब्लम। फिर एक जो बस मेरा, हाँ वो भी लेकिन 1-2 दिन में सही हो गया था। एक हुआ था जब मेरे मदर इन लॉ की डेथ के बाद जब हम लौटे थे, वहां पर हमने वो भारी सा संदूक को हिला दिया था, उठा लेते मेरे हैं। वेस्ट में, हाँ जो हो गया था। उसमें लगे थे मुझे 15 दिन के ऊपर। और वो उस समय अनंत जी आए, तो अनंत जी ने देख के बोल रहा है आपकी तो हालत ही खराब हो रही है। तो वो मेरे पीछे जो कमर में लगा था, तब मैं चल नहीं पा रही थी, वो प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन वो भी बड़े आराम से हिल हो गया। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि ये खा लो वो खा लो, ऐसे करो नहीं, ये परमानेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा सही हो जाएगा, चिंता मत करो। तो उसमें भी हफ्ते भर रहा था काफी ज्यादा तकलीफ, फिर बाद में धीरे धीरे सही। वही सबने भी कल का गुलाब जल वगैरह डाल लो। मैंने कहा ये हो ही जाएगा अपने आप ठीक। जब निकल जाएगा बॉडी से सारे और टॉक्सिक पानी तो। से आप धो सकते हो, नॉर्मल वाटर से, और कोई हम्म दिक्कत नहीं है। बाकी आप पूरा वाटर फास्टिंग मत करिए, जितनी टाइम हो रहा है करिए। बाकी ऐसा करिए कि एक बार या 2 बार कुछ खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जूसी पर फोकस करिए। पर जैसे अभी आप कस्टर्ड एप्पल मत खाइए, थोड़ा सा वही मैं अच्छा यही लगता बोल मैं नेहा मैम को यही बोल रही थी कि पहले यहाँ मिला नहीं, फिर हम ग्वालियर चले गए, वहां पे कस्टर्ड एप्पल मिल नहीं, मतलब अच्छे नहीं थे, जो बाहर मिल भी रहे थे ना क्वालिटी थी ही नहीं। और मैंने है। कहा जब से मैं आई हूँ तब से डिटॉक्स चल रहा है, जब तक इससे साइड रिकवर होंगी मुझे तो लगता है खत्म ही नहीं हो आ जाए। जाए। अच्छा, एक खाइए एक। देखिए पहला मील आप अपना जूसी वाला रखिए, सिर्फ इसका रखिए, मौसम्बी या संतरा या ऐसा कुछ रखिए। दूसरा मील डेंस वाला रख लीजिए, ऐसे करके देखिए। फिलहाल हम तो कोकोनट खा रहे हैं। बच्चे कह रहे कि पिछली बार भी जब मैं आई थी तो भी मेरे मोशंस 2 महीने चले थे, इस बार भी सब बच्चे कह रहे आप बीमार होने जाते हो या हेल्दी होने के लिए जाते हो। और जब नहीं होते तब तो खाना बना ही रहे हो, अब आ गए हो हम तब भी हम ही खाना बना रहे हैं। जो तुम्हें खाना है तो बनाओ। ये आप पड़े हुए हो। उसको प्रिंसी को आप ये माइंडफुल ईटिंग वाला करवा सकते हो। डे इंटू कल का सेशन देख ले, आज का सेशन देख ले, बना के मुझे भेज दे, मैं चेक कर लेती हूँ क्या है। ठीक, मैं बोलती हूँ उसमें। हमने उसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि 1 घंटे में 15 मिनट में 1 लीटर पानी। अभी उसको चाहिए विद इन वेकिंग अप, मतलब उठने से लेके 15 मिनट के अंदर में पानी थोड़ा पी ले, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना उसकी। लिवर क्लेंस तभी होगा जब पानी ज्यादा जाएगा। ओके, मतलब सेफ है 15 मिनट्स कोई में 1 लीटर के आसपास। दिक्कत नहीं, हम बताते हैं ना आपको। हम एक बार में पी लेते हैं, आधा लीटर से ज्यादा ही पी लेते हैं एक ही बार में। वो सब टॉक्सिन्स है।
बहुत टॉक्सिक तो है उसको खैर। उसको अभी चाहिए ही होगा पानी, उसको भी पानी चाहिए होगा, शी नीड्स वाटर मोर। जब वो पी लेगी ना अच्छे से, क्योंकि उसको प्रॉब्लम वही हो रही है, जब वो फ्रूट्स खा के जा रही है तो कॉलेज में उसको जो डिहाइड्रेशन की वजह से ही जो चक्कर आ रहा है या लो सा फील होने लग जा रहा है, जब वो हाइड्रेटेड होके जाएगी तब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो लिखा है। अभी जैसे जो लिखा है पूरा वैसे ही करे, और उसमें जो प्रॉब्लम होगी मैंने उसको बोली दिया है, मुझसे बात कर लेगी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन, अब मुझे भी जाना होगा, काफी देर हो गई है। ठीक है, तो कल हम लोग 6 बजे फिर से ज्वाइन करते हैं, और बाकी मैं जय शर्मा जी को मैंने जो दिया का नंबर है, उनको मैं वीडियोस और बाकी सब बेसिक चीजें भेज दूंगी, तो वो एक बार चेक कर दूंगी। उसके बाद वी सी हाउ वी हैव टू गो विद हर, क्योंकि उनकी मेडिसिन बहुत सारी चल रही है। बाकी सबसे बात हो ही गई है हमारी। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।